शरत महापात्र घर आमर चितलपुर। ए मंदिर बहुत पुराना काल चली आसी आज को 200-250 वर्ष कथा आम कहीपर। ए मंदिर रे ये आम आखपाख 22 खंड पल्ली आसी मंदिर रे रुद्राभिषेक जगछाया इत्यादि सब करते होम यज्ञ समस्त करते। आई रुद्राभिषेक कले जार जहाँ मनाभीष्ट पूर्ण हुए एवं जार संतान संतति न था से लाभ कर। I'm Niranjan sir, Rasul. I hear it say about Rudrabhiseka, which is in our Hindu religion and culture also. It is the part of Hindu religion in which we worship the god Shiva and do the Majana, that is the Abhiseka. It is already occurred in such type of auspicious occasion that the relatives and the surrounding people are welcome, invited, and mainly God Shiva is worshipped specially in this occasion. And this is the really part of Hindu religion in which a get-together is happened in this occasion. Sir, tell me something about Chitalpur Ugreshwar Mandir. Chitalpur Ugreshwar Mandir is the oldest temple. Perhaps this is from the 10th century, and it is told that the linga is not founded by anybody else, but is founded by God itself. So it has the speciality. ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟଭାମା ମିଶ୍ର ରାସୋଲ ବାଲିପୋଷି ଆମର ଘର ବାଲିପୋଷିରୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ସରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପର ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ସେଠି ଚିତ୍ତଲପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ जो पुण्य मिले तो जहाँ मानसिक पूर्ति हुए। एठी आमे पाखापाखि 200 लोक एकाठी होइछु से डाकी 200 लोक को तो रुद्राभिषेक सरीगलानी बहुत भल लगे। रुद्राभिषेक बेले समस्ते एकाठी होइकिना ठाकुरंकर सेवा करवाटा एटा पुण्य थिले भाग्यर थिले मिले। आसिलु मंदिर रे दर्शन कलु ठाकुरं को से रुद्राभिषेक सरला। मो ना शिवशंकर सर मो रुद्राभिषेक कर कि मो नातुणी गोटे ये आम करूँ कामना करूँ तेणु रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक हेले शिवंकर गोटे कृपा मिले तेणु यहाँ आम हिंदू धर्म संस्कृति तेणु यहाँ समस्ते कले अभीष्ट पूर्ण हो। यहाँ चित्तलपुर महादेव मंदिर। केते लोक आस्तिले केते समागम हेतिले 200 लोक आस्तिले। हमर हिंदू रिलीजन हिंदू लोक मान को कोन आपन बात हिंदू लोक जे एबदे जार जहाँ अभीष्ट पूरण करिया को अछि से रुद्राभिषेक कले तांकर अभीष्ट पूरण हो।